Now, hello. This is video number 4, ongoing chapter number 11, part 2, modernization, class 11th, history. In the last video, we have end our class the Japan legal system. Now, today's topic is Japan's war with China. यहाँ से बेटा China introduce कर रहा है with the Japan. So Japan's war with the China, the time period is 1894-95 and with Russia. Japan's war with China, तो चाइना के साथ उसका वॉर होता है बेटा 1894-95 और रशिया के साथ उसका वॉर होता है बेटा 1904-1905. So the Japanese army pressed for the vigorous foreign policies to acquire more territories. जापान डिफीटेड चाइना. अब ये दोनों टाइम याद रखना बेटा, जापान ने दोनों कंट्री को डिफीट किया था, चाइना को भी किया था एंड रशिया को भी किया था. चाइना को किया था उन्होंने 1894-95 में, रशिया को किया था 1904-1905 में. ना मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी इन द जापान. अब देखियो अपनी इकोनॉमी को कैसे उन्होंने मॉडर्नाइजेशन में लाए बेटा. सो जापान इज़ द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन द टोक्यो. ये इंपॉर्टेंट है बेटा. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमने ब्रिटेन में पढ़ा था, ब्रिटेन में पहली रेलवे लाइन बनी. ठीक है, वहाँ से सेटअप स्टार्ट हो रहा है बेटा. ठीक है, इंडिया में बेटा देखिए रेलवे लाइन इससे पहले आ गया था, 1853 में आया था, बट जापान में उसके बहुत बाद में आया था. बट टुडे वी हैव कंपेयर टू इंडिया एंड द जापान in the field of the railway transport, between the both the two countries, Japan has made the bullet train also. तो उनका स्पीड देखिए. सो डैट इज़ द मॉडर्नाइजेशन बेटा. अगर आप किसी कंपेयर कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन को, अब फॉर एग्जांपल रेलवे को यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो जापान में आप देखेंगे कि रेलवे 1772 के अंदर बना और ऑलमोस्ट इससे 20 ईयर्स पहले 1853 में इंडिया में पहला रेलवे ट्रैक बना था बेटा. सो यू हैव कंपेयर बोथ द थिंग्स. सो जापान इज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन द टोक्यो एंड द पोर्ट ऑफ योकोहामा. ये इंपॉर्टेंट नेम है बेटा. टोक्यो से योकोहामा जो उनका पोर्ट था वहाँ तक पहला रेलवे ट्रैक बना एंड वॉज बिल्ड इन द 1870-72. Textile machineries was imported from the Europe and foreign technique were employed to the train workers, help the teach in the universities and schools, and the Japanese students were sent abroad. In 1872, the modern banking institution was also launched. Okay? Companies like Mitsubishi and Sumitomo were helped through the subsidies and the tax benefits to become the major shipbuilders, so that the Japanese trade was formed new carried in the Japan ships. Jaibastu, large business organization controlled by the individuals families. उनको बेटा जयबास्तुस कहते थे वहाँ पे. ठीक है, सो लार्ज बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते थे और उनको इंडिविजुअल्स फैमिली कंट्रोल करते थे. वी नोन है जयबातुस. द पॉपुलेशन, अब देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ हो रहा है. 35 मिलियन इन 1872, इंक्रीज द 55 मिलियन इन 1920. To reduce the population, pressure of the government actively increased the migrations. First to the northern island to Hokkaido where the Ainu lives, and then is the Haveli and the Brazils, Hawaii and Brazils. By the 1925, 21% of the population lived in the cities. By the 1935, this figure had gone up to 32%, 22.5 millions across. Now, the number of the population manufacturing increased from the 7 lakh to 1817 to 4 millions in 1930. Over half of those employed in the modern factories were the women, and it was women who organized the first modern strike in 1886. Tanka Sojo elected the first House of Representatives, launched the first agitations against the industrial pollution in 1817 with the 800 villagers in the mass protest, forcing the government to take actions also. Tanka Shoujo and 1841 to 1943. अब यहाँ पे एक Tanka Shoujo was the son of farmer in Japan. He participated in the popular rights movement in the 1880s, a movement demanding constitutional government also. He was elected the member of the first Diet is the parliament in the in the Japan. He believes that the ordinary people should not be sacrifices for industrial progress.
The Osho mine was the polluting the western Rice River, running 1,100 square miles to the farmlands and affected the thousands of families. The agitations forced the companies to take the pollutions, control the measures so that by the 1904 harvest were the normals. Aggressive nationalism in Japan. The Meiji Constitution was based on the restrict for franchises and credit the deities with the limited powers. Then did the power also in the shift. You know, nationalism feeling is immersed to the Japans, but how they control to each others, because वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ रहा है, यूएसए भी एंट्री ले रहा, फ्रांस एंड रसिया दे आर आल्सो टू कम टू इन द जापान. तो उन सब के बीच में कैसे उन्होंने अपने आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप किया, देयर विल बी thinking. The emperor was the commander of the force and from 19 the emperor was the commander of the force, and from the 1819 this was the interpreted to mean that the army and then the navy of independent control. In 1899 the prime minister ordered to only the serving generals and the admirals could become the ministers. अब सिर्फ जो जनरेटर्स होंगे, जनरल्स होंगे, वो और एडमायर्स ओनली दे मेक द मिनिस्टर्स. सो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया एंड द स्ट्रेंथ द मिलिट्रीज, इससे बेटा आर्मी स्ट्रॉन्ग बना. The expansion of the Japan's colonial empires was the connecting with the fear that the Japan was the mercy in the Western powers. So in this video, thank you.